انفا جموں کشمیر ٹی وی ریاست کے ہر بے زبان طبقے کی ترجمانی کرتا ہے۔ جے کے ٹی وی جو اظہار رائے کی مکمل آزادی پر یقین رکھتے ہوئے بین الاقوامی طور پر منظور اور تسلیم شدہ حق کے اظہار رائے کا پاسدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرتا ہے کہ ادارہ کسی بھی شو میں ہونے والی گفتگو یا استعمال کیے جانے والے الفاظ کا ذمہ دار نہیں۔ Hi, Assalamu alaikum. I'd like to welcome you all to شاعرانہ موسم. ایک مہینہ ہے جو ایک دفعہ پروگرام ہویا کرسی جس نے وچ میں تساں کی تھوڑی جی اپنی شاعری سناساں تے اس نے نال ہر مہینے ایک نویں گیسٹ ہویا کرسن جڑے شاعر یا شاعران جڑا اپنا کم شیئر کرسن. میں ترے زباناں بولنی آں، پہاڑی، اردو تے انگریزی تے جے ہمارے گیسٹ ہوسن او بھی اے مختلف زباناں بولنے والے ہوسن تے اگر مکس زباناں چ لکھنے تو مکس اپنی شاعری شیئر کرسن. اپنے کمے تو نال میں انہیں کی یہ گل آکساں کہ جڑا انہاں دی پسند نہ کوئی شاعر ہے یا شاعران انہاں نے کم آنن تے ایک دو شعر انہاں نے بارے چ سنان تاکہ اساں ڈفرنٹ جڑا نہ شاعراں نے بارے چ سیکھی بھی سکاں تے انہاں نے کلام بھی بجھی سکاں. ہن تھوڑا جا ہمارے بارے چ اِتھ ہمارا نام نبیلہ احمد ہے. میں 3 زباناں وچ شاعری لکھنی آں، اِتھ پہاڑی پٹھواڑی وچ، اردو وچ تے انگریزی وچ. میں فکشن تے نان فکشن بھی لکھنی آں تے ہمارا جڑا فکشن نام نویلا ہے او it شائع ہویا and you can get hold of it via Amazon and it is called Despite Our Differences. ہماری جی شاعری نہ مجموعہ او اس سال نے آخر پر چھپسی and it's going to be through Yaffle Press. اپنی زبان جڑی ہے میں ایڈجسٹ کو نہ کرن لگی مین ریزن اس مانے ہے کہ اساں نے جڑی آڈینس مینلی ہو او تساں کشمیر نے بندے ہو جڑے دنیا وچ جتھے بھی رہنے ہو تے اساں کافی ورسٹائل بندے ہیں کم از کم 2-3 زباناں تو اساں بولنے ہی ہونے ہیں. سو میں اپنی زبان اس طرح مکس رکھساں جی پتہ تساں زیادہ تر بھی اس طرح ہی بولنے ہو سمجھنے ہو. سو اج نہیں جڑی ہے نا میں اپنی ایک نظم جو ابتدا کرساں سنالا اس تو پہلے کہ میں اپنی ونڈرفل گیسٹ کی بلاں. سو پہلی ہماری نظم جڑی ہے اس نا اٹ نانی نہ گراں and it says زندگی گزری گئی ہے، زندگی گزری گئی ہے پر نانی نہ او گراں نہیں بھلنا، او دلیج او چلہ نہیں بھلنا، او دلیج او چلہ نہیں بھلنا، تپنی دوپہری کالے چومنیا حالہ نہیں روٹی تے تازہ سالن نہیں بھلنا، او مکھن او لسی نہیں بھلنی، بڑی حالانہ لاٹ نہیں بھلنا، سردیاں وچ ماموں نہیں مونگ پھلی تے گرمیاں وچ جوس نہیں بھلنا، سریے نال بائی بھی پینگ نہیں بھلنی، نانی نہیں کسی بھی چوٹ نہیں بھلنی، ہتھاں وچ مہندی نہیں گوگی نہیں بھلنی، لیراں نال بنائی ہوئیاں گڈیاں نہیں بھلنیاں، ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਵੀਟਾਂ ਤੇ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰੇ ਜਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ, ਉਹ ਘੜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬੇੜੇ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਉਹ ਈਦਾਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ੂਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਨੀ ਨਾ ਉਹ ਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ. ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੈਸਟ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਮੈਮਰੀ ਲੇਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ کومل راجہ. سوچو جتنے جتنے بندے انہوں کی تکی چکے ہو انتہائی امپریسڈ ہو سو شکر کرنے ہو سکے انہیں لکھنا شروع کیتا تے شیئر کرنے تے جڑے نو واقف اج تو بعد انشاءاللہ you'll be a big fan of her. انہیں کومل راجہ پونچھ نے رہنے والے تے اس وقت جنے پی ایچ ڈی اسکالر ان سوشل اینڈ کلچرل انتھروپولوجی تے جرمنی وچ پڑھنے لگے ہوئے آتھر پوئٹ اینڈ فلسفی نے شوقین میں انہیں کی انوائٹ کرنی ہاں تے تساں کی ملانی ہاں. Hi, Assalamu alaikum, Komal. Walaikum assalam. Thank you very much for being my first guest on my first show. سانکی میں اس میں نے چوز کیتا سی کہ اکثر آخنے ہونے کہ رائٹر یا جڑے این شاعر ایکسیٹرا انکلوڈنگ میاں محمد بخش نے شکایت سی کہ اپنے گھروں جڑے نا اپنی شاعری نہیں ملنی تو میں سوچا اگر میں شاعر جڑا نا یا انوائٹ کرساں پہاڑی نے بھی کرساں اردو نے بھی کرساں تو ہمارے انگریز دوست یا ایکسٹرا انہیں کی بھی کرساں اتھا لیکن ابتدا اپنے گھروں کرنی چاہیے ہے تے تسا جڑا نا سانا کم جڑا جڑے اساں اپنے پہاڑی گروپاں وچ پجنے پڑھنے we're absolutely loving it. You constantly take us down memory lane. جیسے لفظ یوز کرنے اس کی یاد اشنی ہے and جیسے کچھ نظمان like proper بڑیاں میاں جلسہ گلا کرنے and it's like you do this and this and this. It's like really warming our hearts. And I want to say thank you. بہت شکریہ سانے اتنی پذیرائی نہ اتنی حوصلہ افزائی نہ اور یقین بنو کہ مکی بھی ظاہر ہے بہت
एक ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰੂਟਿਡਨੈਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਯੋਂਡ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈ। And this is the magic of poetry, I think, that it connects people beyond borders. Border Yes. sangi pata asani zindagi na ek almi hai, being a resident of the state of Jammu and Kashmir. जी So yes, it's thank you very much for your such big praise. And yeah, you're most welcome. आज कोमल इब्तिदा से अपनी एक दो नज़्म सुनाना चाहते हो, फिर मैं आपको चंद सवाल भी पूछने। Okay, that would be very sudden, but yes, let's do that. And I think for हमारी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪੂ ਵੀ ਬੜੀ ਅਚਾਨਕ ਸੀ ठीक ਕਿ I was like unable in the middle of the night. I just woke up ਨਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਸ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ जी और उस भी कितना एक्साइटेड किया उस चीज़ के मैं सोचा कि एक बारी लिखन होगा आजकल तो ज़रा आसानी है कि कॉपी पेन जी नहीं मैं उथे अपने फ़ोन ने नोट्स ऊपर लिखनी रहनी है जी तो और देन आई रोट इट एंड आई शेयर्ड इट लाइक द नेक्स्ट डे और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं सा कि इतनी ज़्यादा वो पसंद की जैसी है उसने ऊपर इस किस्म ना रद्द अमल ऐसी लोगों मतलब मैं तो कैजुअली बहुत अरसे की चीज़ें शेयर करनी हैं जी बट मैं अपनी उस नज़म थी शुरू कर सा तो उसका उन्वान है निकिए तू निक्की ना रही जी तो ये एक ज़रा एक फेमिनिस्टिक क्रिटिक है तो बहरहाल मी शायरी ना मज़ा ख़राब हो जाना जिसला शायरी की सब पहले एक्सप्लेन करना शुरू करी छोड़ना जी था मैं बंदा सम सुना सा मतलब अपनी मर्जी ने ऑडियंस करने रहा बेशक तो चौथी तरप्पी रही है कुड़िए सिरे चादर टकाई ना सकनी जी चौथी तरप्पी रही है कुड़िए सिरे हम्म, चादर टकाई ना सकनी थम्मै जितना कद कड़ियाई पर हम्म, बेड़ी झाड़ू लाई ना सकनी हम्म, नाड़ेर तूं नाई ना सकनी हम्म, रंगड़ेर तूं जाई ना सकनी जी क्रिकेट वै या इट्टी डंडा हम्म, रेसां भराऊ नाल लाई ना सकनी हम्म, नवाशां वेलै बन्ने नहीं नवाशां वेलै बन्ने बेही के जी उच्ची आवाज़ च गाई ना सकनी yeah ओपरे चोपरे लोकां अग्गै हम्म, गल्लां तूं हुण बाही ना सकनी जी अद्धी छुट्टी वेलै निक्किए हम्म, बजारै चों तूं खाई ना सकनी जी मसीतै अंदर सपारा पढ़ने हम्म, मुंडियां नाल तूं जाई ना सकनी yeah परांदा बाही के चोटी करने हम्म, बालां दी धून कटाई ना सकनी जी निक्किए तूं हुण निक्की ना रही जी thank you very much thank you it's a beautiful poem मैं क्या भी बुझी हुई है पर जिल्लै भी बुझो you get something new from it ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੋਣੀ ਬੁੱਝੀਆਂ ਉਹ ਇਚਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਜਾ ਸੋ ਸਮਝ ਸੋ ਕੋਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा शायरी जेह्ड़ा ओह् एज़ ए जॉनरा में सोची समझी के नहीं कदें भी स्टार्ट कीता लेकिन हमारे अंदर जेह्ड़ा एक राइटिंग कैपेबिलिटी है सी बहुत बचपन थी ज़ाहिर है में as far as I remember I think it was first time I was in 5th grade or 4th grade so असां ने स्कूल ना गया सा एक ट्रिप वन जी डे ट्रिप्स होने से ना उत्थे ही लोकल पता नहीं बंजोसा गए सी असां या कुछ इस तरह की जगह पर तो वापस अची असां टीचर्स बाया के इरुदाद लिखनी तुसां इस सफर ने इस ट्रिप ठीक ने है ठीक ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਸੋ ਆਈ जी ਜਸਟ ਰੋਟ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈ ਗॉट द फर्स्ट प्राइज हाँ तो माशाल्लाह वो मतलब हमारे से बहुत ज़्यादा एक उस सेंस भी सरप्राइजिंग था कि ओके ये प्राइज बेस्ड है या ज़ाहिर है साने स्कूल जी ने 9th 10th ग्रेड ने लोग भी उस विच उन्हें वो भी पार्टिसिपेंट से और ठीक आई बीइंग 5th ग्रेडर yeah winning the first prize was something like कि yes अच्छा a massive thing yeah और उत्थों फिर खैर मैं तो भी अपने आप की इतना सीरियस नहीं लिए इंदा क्या कि ऑफ कोर्स 5 ग्रेड इतना तो हम्म, साना नहीं होना but then I I'm a डायरी राइटर ना सो मैं जी हमेशा से डायरी लिखनी आता है मैं ठीक हाले थोड़ी भी लिखनी है वो हमारी आदत है जी और नज़्म अलबत्ता मैं जेह्ड़ा ऐ ओह् जिस वक़्त मैं 8th 9th क्लास विच आई आं ते ठीक ओह् मैं एक अपने आप गी पैह्ले लेकिन ओह् माड़ी मैं अंग्रेज़ी भी जदूं ट्राई करना जस्ट द राइमिंग स्कीम जदूं असां 9th जी क्लास इंट्रोड्यूस होया ना कि अच्छा जी पोएम भी एक चीज़ होनी और राइमिंग स्कीम होनी उसने विच जी
Yes. So I found it very interesting, and I did these creative experimentation. Also, teacher padhane se A B rhyming scheme, and I was like, Yes. wow, it's like mathematics. So let's try it. So Ji. that was deliberate poems. I have a dream that I have an ice cream and something like that. So Yes. I made Yeah. these, but then the serious thing was also, I think, when I remember it very vividly. It was about the situation, political situation in Jammu Kashmir. So it was Ji. about India, Pakistan, and army, and pressure, and glacier, and I just tried to Yes. make these rhyming words, but Yeah. it had a deep down meaning in it. Ji. Then afterwards, I think seriously I took it when I went to Government College Lahore. So जी। वो एक आसानी वो अदारा है ही इस तरह ना कि उसने एक ज़ाहिर उसने पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन अदबी ट्रेडिशन नाउ मालिक है लेगेसी है तो जी। उत्थे एक इन्वायरमेंट उसने किस तरह लबना कि उसने अंदर जड़ियां भी सलाइयां तो वो मजीद पॉलिश होनी सो आई हैड लाइक देन सो मेनी opportunities to write and share and present my things and then get critique जी। फिर उत्थे सारा सिलसिला जी। शुरू हुआ Yeah. so जी, that's yeah, wonderful. that's started. I think that's an interesting journey. As somebody in fifth, grade to write an article, the Buddha school that you look by, that's that's a lot of Yes, that's this a is lot of like praise, I isn't it? even didn't remember these things, no. But Yeah. when you asked me, or तो Yeah. जिसे अपनी उस journey की retrospect जी। भी कर रहे हो ना, then you try Yeah. to make an arrangement that okay, how Yeah. you trace a Yeah. line. So like normally I would never thought about that. Okay, in my 30s I would be talking about that fifth grade Yeah. event of my life. But Yeah. yes, I think that's how it started. Yeah. Thank you. ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰੀਆਂ sort of ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ it was about barriers and difficulties but ਮੈਂ sort of three levels interested in such ਪਹਿਲਾ level ਇਹ ਹੈ ਕਿ it personal family level ਨਾ sort of ਜਿਹੜਾ ਨਾ were there any barriers ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕਲਚਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਐਕਸੈਟਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਨਨ The second level is as a writer ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ it's in different genres. Do you have a preference for one of them? In non-fiction or fiction, yeah, poetry. Inna which ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ certain themes easy ਲੱਗਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣੀਆਂ what barriers do you face in writing? And ਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ different languages ਵਿੱਚ ਲਿਖਨੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ languages ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ certain ਮੌਜ਼ੂਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੈਸੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ automatically ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੋ So barriers and difficulties, personal life, writer, and it's multilingual. Okay. So yeah, to answer your first question, that कि personal तो साना जड़ा एक parental response है इस सानिया चीज़ों पर तो असाने मतलब luckily I would say that I have a very supportive family and my especially I think I can like in this world it's very difficult to I know people जिन्हां बड़ा problematic relationship हो जाना क्या कि असानी generations different and mindset different है लेकिन हमारे केस इस तरह है कि मेरी both of my parents father and mother both मतलब I think उन्हां से ज़्यादा मेरी कोई भी नहीं समझना खास तौर पर my mother so my father used to be this kind of creative person and experimental person so I grew up listening to बोस्तान ने अशार फारसी विच ते गुलिस्तान ने फारसी ते इस तरह ना अब्बू की कुछ थोड़े-थोड़े याद होने से इस तरह नहीं कि असां घर कोई लाइब्रेरी बनती सी ते बड़े असां कोई पढ़ा लिखा बैकग्राउंड सा नो नॉट लाइक दैट बट उन्हां की शौक सा सो उन्हां की लिखने ना पढ़ने ना इना चीज़ां बड़ा शौक सा फिर माय मदर वाज आल्सो आई मीन शी हैज दिस कैपेबिलिटी बट शी नेवर परसूड इट सो उन्हां ने अपनियां प्रेफरेंसेस होइयां उसन बट आई रिमेंबर दैट शी आल्सो यूज्ड टू राइट डायरी लेकिन that in that diary I mean she would also write songs sometimes and I think she never shared that and I'm not sure कि मैं किस तरह बाना चाहिए ना कि नहीं लेकिन उसके बाद ज़रा उन्होंने pursue किया उन्होंने अपनी reasons होसन I cannot say for sure why तो मिगी अपने घरों जड़ा है वो इस तरह ना हमेशा encouragement लब्बी और फिर it's a journey for example on इस ना जड़ा एक stage आएगी ना it was never like that before it was an experimental journey और इस तरह ना तुसा एक स्ट्रॉन्ग खास तौर पर मतलब मैं तो उस ज़माने ते लिखनी है जदों सोशल मीडिया वाज नॉट इवन इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट एंड देन इट वाज नॉट एज मच पॉपुलर एज इट इज टुडे जी सो लेकिन असां ने पेरेंट्स हमेशा वो जिस जेड़े स्कूल ने रसाले होने से
उसी च जी, अगर असां कोई चीज़ां छपियां तो वो उसनी कॉपी स्पेशल एक सेव करियै घर रखने से तो उत्थों जी, फिर तुसेंगी अंदाजा होई जाना कि हाउ मच इट या मीन्स टू देम। जी, सो मेरे अब्बू ते बल्कि माड़ी बड़ी भैन जेह्ड़ी ऐ ओह् निक्के होने अखबारां च लिखनी होनी सी फूल एंड कलियां एंड मैं भी लिखनी होनी सी यंग जेह्ड़ा पेज है डॉन जी, न्यूज़पेपर दा जी, यंग पता नहीं क्या भुल्ल गेआ हून मिगी नां। जी, So जी, yes, so in my case, my family has always been very supportive in this sense, particularly like कि okay, studies is your main job, but जी, other than that, हर मैदान विच तुस अपने आप गी करो explore, और जी, it's open for you and we are at your back. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah. Now as a writer then, Mhm. in terms of different genres, um, I, I suppose that you write in, अपने अंदर as a writer की इतनी difficulties होनियां जैसे कि कई बार समझ भी बाद विच अचनियां तो सानू सबर किया जे रहा. That's true. तो जित्थे थोड़ी सवाल है ना genre ना, I am still struggling with that. Because for sure, what I know about myself is that I have this writing capability, and I am a writer. Like when मैं at least life ने ऐसे stage पर पहुंच गई हूं कि मैं बड़े दावे नाल गल बाई सकनी हां. पहले तो एक होना ना humbleness, unsurety, blah Yes. blah blah. नहीं यार I'm जी, just trying माड़े दा मैं बस तजर्बे हैं. No, I think जी, yes I am, because I have already written so many things, be it जी, academic या non-academic. दूआ सवाल है fiction and non-fiction ने हवाले नाल. So I think I always talked in the metaphorical language, but I talked about the real life events. So it's not जी, completely fiction and it's not completely non-fiction. ठीक कि है. मतलब Yeah, इंस्पायर्ड बाय जनरली भी फिक्शन इंस्पायर्ड बाय रियल होनी, लेकिन एक होनी ना जी, प्योर फिक्शन जेह्ड़ी yeah, हैरी पॉटर टाइप और प्योर फिक्शन जी, है, या वैम्पायर डायरीज है. आई दैट्स नॉट माय कप ऑफ genre and stuff. जी, yeah, एंड आई थिंक कि मैं जेह्ड़ा ऐसे नी फॉर्म च या प्रोज नी फॉर्म च चीज़ां लिखनियां mm, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ. ਉਸਨੇ mm, ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨਸਾਈਟ ਹੋ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ mm, ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਹੋ ਸੀ, जी, even though it's just the unfolding of your everyday routine events. चाहे वो yes, एक ब्रेकअप ना कोई सिचुएशन है, कोई मोहब्बत नहीं सिचुएशन है, कोई mm, डेली लाइफ ना whatever kind of scene. जी, तो इस चीज़ें ने अंदर मेरी हेल्प इस तरह भी हुई कि व्हेन आई परस्यूड like in my academic journey anthropology as a subject. So like ethnographic writing is very much similar to the short story writing अफसाना जिसके तुम आई सकते हो, but जी, anthropological writing is of course with the real people, real stories, real settings. So वो जी, बड़ा एक हमारे से complementary journey बनी गया कि हमारी जी, creative yeah, capability उसने भी जड़ा जम होएगी yeah, ethnographic work ने अंदर. So I जी, write my ethnographic stories as if it can be filmized very easily कि बड़े आराम नाल उसकी right, उस ऊपर film बनाई सकते हो कि every जी, direction is there. ठीक है. तो Yeah, और genre नाल मैं हाले थोड़ी struggle करनी है, because I think I for sure don't want to label myself as a poet. mm, मैं नहीं उस ऊपर हाले तक mm, भी उस तरह की कि poetry ने अपने बड़े अपनी मतलब माड़े अपने कुछ beliefs हैं to be a poet. Okay, जी, it's one thing that you have that's inside you this creative capability, and तुसां mm, जितने पूरा मैदान असां करो तजर्बे modern जी, poetry ना yeah, वो भी है point भी है कि like subjective and everything. जी, But in this sense, I am a kind of traditional oriented and right, classical oriented person, so I go by the by rule by book. right, तो इस मामले च ठीक, मिगी है कि नहीं, one must have this craft तुसां mm, पीता हुआ होगा. जी, और क्राफ्ट ऑफ कोर्स वो स्किल है, वो अशना वो उसने ऊपर से की प्रैक्टिस करनी पैनी. exactly, और yeah, कुछ लोगों की होना कि वो पैदाइशी तौर पर मौजू होने और उन्हां की mm, कोई लोड़ नहीं होनी, मगर उन्हां की भी होनी लोड़. सो जी, पीपल प्रैक्टिस इट, एंड आई थिंक वन मस्ट. अगर तुस पार्ट की स्किप करी का हो के नहीं जी मैं क्राफ्ट नहीं बंदिश च नहीं रहना चाहना, तो नज़म में ज़्यादा mm, पॉसिबिलिटी है, तो गज़ल इच घट है, तो mm, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੀ yes, ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ग़ज़ल ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਹੈ जी, ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, then you can जी, talk or choose. जी, So I think if as a poet, I will not, especially in Urdu language, I जी, have no claims जी, that I am a poet in Urdu language. But yes, in Pahari, I think इसी चीज़ तुसां ने तीसरे सवाल का जवाब है कि जी, लैंग्वेजेज़ ने हवाले नाल जितनी सहूलत मेरी पहाड़ी ज़ुबान विच है ना, क्योंकि पहाड़ी जी, ज़ुबान इच द थिंग्स कम इन रिदम. The जी, very first sentence and the very next sentence, they're already in a music. जी, It comes to me because I am familiar with
वर्ड जड़ा है उन्होंने डिफरेंट किस्म ने एक्सप्रेशंस वास्ते कड़ा लफ्ज इत्थे किस तरह सी और असाना जड़ा अपना एक जी यू नो एथॉस है पूरा कल्चर उसकी किनी जी है तो म्यूजिक बनी जाना जी ऑटो म्यूजिक है वो जी हमारे वास्ते उर्दू विच जाहिर है मिगी उसकी इस्सा गल्लों मैं उर्दू भी ज्यादा प्रोज पोइट्री की थी उस जी प्रोज पोइट्री जी होनी नहीं होनी बहरहाल नसरी नज़मां जड़ियां ने मैं लिखियां जी क्योंकि उसके विच वो बहुत बड़ी डेलिब्रेट एफर्ट वो सामने वाज़ेह होई जानी सी ना कि अगर आई ट्राई टू जी मेक इट yes म्यूजिकल सो आई डोंट डू द डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ मे इन माय जी डार्क रूम आई डू एवरीथिंग बिहाइंड द जी ऑफ कोर्स जी यू नो कट जी कुट ये वो सब आप करते हैं मगर जी जड़ा एक हमारा स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है लैंग्वेजेस हम्म ने हमारे नाल पहाड़ी च मिगी बड़ी सहूलत है हम्म उर्दू विच भी मिगी सहूलत है और इट डिपेंड्स कि मैं विच लैंग्वेज आई चूज़ उर्दू एंड इंग्लिश खास तौर पर हम्म Uh, I think it is related to my inspiration and my okay, from the muse, the idea of muse. So ਜਿਹੜੀ जी हमारी muse ਦੀ language हो सी ना वो जी automatic creative expression ਦੀ language ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸੀ ਹਾਂ ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹੋ ਸੌਰੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹੋ नहीं जर्मन तो हमारी हाले इस काबिल नहीं हुई मैं सिर्फ जर्मन जुबान कुछ एवं तजर्बे किए से असा ने बिल्कुल वो भी बहुत बेसिक ओदा शायद जर्मन तो उन्होंने सॉन्ग भी ना समझने हो सन लेकिन ਉਹ ਯੂ نو ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ जी ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਹੋਣੇ ਉਹ जी ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ तो इतने जी मिगी उस तरह लगे कि जिस तरह वो एक रिदम विच से तो जी उन्होंने हमारे माइंड विच किया कि आई थिंक इन पहाड़ी जी तो दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज लर्निंग ये हमारा जो लैंग्वेज लर्निंग ने एक्सपेरिमेंट होया ना उस विच फिर मैं तो कहा कि विचो इंग्लिश की भी कड्डो तो उर्दू की भी कड्डो डायरेक्ट पहाड़ी जर्मन तां मिगी जी जर्मन आई ना नहीं आई जी सकनी तो या फिर वो भी ऑटो पर ट्रांसलेट हुए तो मैं एक दो कुछ जी गाने जर्मन ट्रांसलेट किए मैं खुद जर्मन नहीं हाले कुछ प्रोड्यूस किया हाले तो जी हमारी लेवल भी नहीं है उतना लैंग्वेज में ये थैंक यू ਮੈਂ ਬੁੱਝੇ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸੋ ਇਸ ਮਾਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ in terms of मैं recently किताब पढ़न लगी हुई हाँ तो उस 1780 सेटअप हुई हुई है तो उसने जो उस वक्त एक्सप्लोर करने लगे हुए वो बूटियां ने एक तजर्बा करने लगे हुए ताकि इनके डिफाइन करने लगे हुए इनके बूटियां ने पत्ता है स्टेम है तो वो जो ऑथर है ना वो सॉर्ट ऑफ पुश करने लगे आइडिया कि ये चीज़ चंगी नहीं कि सिर्फ जरा ना बूटे की इंडिविजुअली नहीं तकना चाहिए ना तो उन्होंने कि अस बंदे भी जरा ना इस 1780 चाहने कि इस पास जान लगे हैं कि जे पोएट हो तो सिर्फ पोएट होना चाहिए ना जे राइटर हो तो सिर्फ राइटर हो तो जे फिक्शन नहीं हो तो सिर्फ फिक्शन नहीं हो तो इस लाइक एक बंदे की लिमिट करने लगे या कि तुम सिर्फ एक शोबे ची स्पेशलिज्म करो सो मैं भी जरा ना उस ऑथर उम्मीद करनी है कि तुम एक शोबे की लेबल लाने नहीं पर वाफिया फिक्र कोनो करन लगे तो जेडी चीज थोड़े जहन च क्रिएटिविटी उसकी सो एक्सप्लोर कर सो yes yes I also agree because we have like multiple selves and our every self should be nourished ओ जी उसने उसकी तुसा बॉक्स विच बंद ना करो ते बॉक्स विच बंद करने में भी जमाने ना काम होना उन्हें नहीं जी मर्जी है वो या करने ना और डब्बा भी जमाने ना वो बंद करन खोलन जो मर्जी करन आसान exactly कर नहीं पैना ये thank you are you ready to share a few more poems I would like to share one of my poems in English language जी and उसने एक वजह है वो मैं सोची का आंदी सी नाल कि मैं ठीक है सारे शोज जो शेयर कर सा उस वो थोड़ी जी रिलेटेड है उस विच मैं एक जिक्र करनी पई है कि फ्रॉम वेयर आई गेट इंस्पिरेशंस लाइक हमारा जी जड़ा मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना इट्स नॉट फिक्स्ड ऑफ कोर्स आई कैन गेट इंस्पिरेशन एनी टाइम फ्रॉम एनीथिंग बट जी मेनली उसने अंदर वो फिर उस गुफ्तगू बादिश करने आता मैं तुसा की एक अंग्रेजी नज़म सुना ठीक है and then so it's a morning poem. In the morning light, before the sun has risen high, I wake up with a feeling, a special kind of high. It's the feeling of love that fills me up inside. And I long to hear my beloved's call, text, smile, or see their face. My heart beats with excitement as I reach my phone, hoping for a message, a sign that I'm not alone. With every notification, my smile grows wider still. As I bask in the warmth of my beloved's love, my heart they fill. I become a poem in the morning, with verses yet untold, a symphony of words and thoughts waiting to unfold. As I long for a reader, a philosopher to see the beauty of my complexity, the depths of my creativity. So let me wake up to the call of my beloved, to the sweet sound of their voice, my heart soothed. For in their love, I find the inspiration to be the best version of myself, creative and free. wow that's a very beautiful poem and on many different levels
I think if it's just about feeling that you're not alone in the morning, it's such a lovely, thing to know that there's somebody else and somebody who sees you. And I think on a deeper level, as somebody who does write and creative and has a lot of complexities, it's so wonderful to feel that you're seen and you're heard. So Yes. thank you for sharing that. But ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ ਨਾ, ਇਟਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਵੇਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਸਾਸ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ I think every writer can relate to that, or every person who is an artist can relate to that, that we feel the things that apparently are kind of non-existent, no? Yeah. तो मतलब एक छोटी जी बारिश ने कतरे नी टिप है ना, ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਰਾਤਾਂ ਜਗਾਈ ਕੇ ਰੱਖ ਸੀ, because it goes in your head and it's already a piece of art. So sometimes it's like weather, sometimes it's my kyunki hamare jehde antennas hai na, sensors hain towards nature, they're also very active. So main mara mood pure din na bahut zyada dictate hona, the kind of morning came upon, मतलब in a sense कि जिस तरह नी सुबह हो सी ना, वो बादलों वाली अगर सुबह है तो हमारा पूरा दिन बादल डिक्टेट कर सन, जे धूप निकली भी है तो धूप डिक्टेट कर सी. So I have like पता नहीं कदों माड़ी ये फ्रीडम मार कोलों जालिम समाज खसी किंसी जिसले मेरी नौकरियां करनियां पसंद है, रोटियां बेलनियां पसंद, लेकिन फिलहाल I enjoy this freedom totally कि the sun will decide how I'm going to spend the day today. So if sun decides to appear, I will follow. If cloud decides to appear, I will follow. So that's how I start my day. So sometimes हमारे से इतना एक beautiful मंजर है ना कि it's like एक Monday, every day. It's like sun rises every day. But it gives me sometimes हमारे से सुबह जिसले हमारी आँख खुली मिगी सूरज नाल एक हमारा interaction होना ना पहला, तो I can stay in that state and I will, मतलब मैं उठे stuck हो जाने हैं कितनी दफा हमारे नाल इस तरह होया. ये मॉर्निंग पोएम भी मैं बिल्कुल इसी तरह लिखी, इस सूरज नाल माटा होना पे खिड़की जो मैं तकली पे और forget about कि मैं उठी गया कोई नाश्ता करना, मेरी भूख लगी हुई, मैं दिन शुरू करना, अपनी कैलेंडर चेक करा, कड़ी कोई मीटिंग तो नहीं आज गया, forget about everything. So sometimes it happens like that. And दूआ जड़ा है कि मारी जड़ी म्यूज ना एक जड़ा मतलब मैं I create ideas of persons in my head. And then I try to find those persons in real life. That's like also very basic Bollywood kind of shit. अगर इसकी बहुत आसान लफ्ज़ें आखे आ जाए, लेकिन it's not that. It's larger than that. So it's not नहीं कि तू सपना कोई Mr. Perfect लोड़ने ने चक्रा विचो. No, it's a different. So the kind of idea of a person that I create in my head, then I talk to that idea. और फिर उस आइडिया ने इर्द गिर्द इतना ज्यादा बिल्ड करना, ब्यूटीफाई करना, उसकी डेकोरेट करना, उसकी उसने अंदरों हर तरह नी फीलिंग की जड़ा वो इतना जिस सारे हो ना कि मटेरियलाइज करने हो तो अपने वर्ड्स ने नाल उस फीलिंग्स की, और वो खाली डिजायर या लव या लवी डवी और रोमांस और ये फीलिंग्स नहीं, इट्स लाइक लार्जर एंड बिगर एंड all encompassing life. Yes. So that's how sometimes it's not my muse also lies inside me, sometimes it's not outside, मतलब कि ये natural कोई element नहीं हो लगा, कोई इंसान नहीं हो लगा कि जिसको मैं बहुत inspire हुई भी हाँ तो मैं उसको inspire हुई कि ना लिखी छोड़ी ये किया वो किया. No, it's also that I create an idea in my head and then that becomes my muse and then I play around with that, and sometimes if that idea coincides with some real person in this world, फिर उस पर्सन बेचारे ने तो खैर ही नहीं होनी, imagination क्या होगा ये, what are you talking about? In my world you did that, how come you don't here? Exactly, you don't know me. Like yes, कोमल सब एक नावल नगार ते एक अफसाना नगार है. सो मैं लुक फॉरवर्ड करनी है उन्ना सालां जिले इन्ना चीज़ां जो गुजरी चुकी हो ना ते उसकी भी इजाजत देसो, क्योंकि ये जेह्ड़ी दुनिया बिल्ड कीती है ना इसने जेह्ड़े नावल नगार ते अफसाना नगार ना बड़ा ही वक्त गुजारने. अच्छा अच्छा ये मिगी ना हमेशा हमारे जितने सिंसियर दोस्त हैं ना हमारे नाल इस पूरी जर्नी विच जेह्ड़े क्रिएटिव जिन्हां नाल ताल्लुक है अदबी दुनिया नाल, आर्ट दी दुनिया नाल, सो like from right very मैं मारे बहुत बचपन ने जमाने थे जेह्ड़े टीचर्स होने जेह्ड़े कोई तुसां कीता की गल बाई छोड़ने जेह्ड़े साने बुजुर्ग होने महल्ले ने, so I have heard it like for hundreds of times of people telling me कि
तू नॉवल लिख, तू अफसाना लिख, ਉਹ ਹੈ ਤਾੜਾ, ਉਹ ਯੋਨਰਾ ਹੈ। ਤੇ I ਮਿਗੀ don't think ਹਾਲੇ ਇੱਕ genre ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਬੁਝਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੀ ਬਾਣਾ ਚਾਹਨੀ and लेकिन especially it's some not ਬਹੁਤ because ਸਾਰੇ वो ਜੋ गल वायरल है, yeah बड़ी उसनकली कोई, because you can say you're in a position from where you see you're on that position और तब तक ही सकने हो कि कौन क्या करना पिया. So I think I will give yeah a time to the novelist in me as well sometime. cool But I think now it's also time to take it serious because so many people have told me so. ਜੀ I think ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਟ ਆਫ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਟ ਆਫ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੌਰ ਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ knowing मैं बहुत सारा अरसा हो गया ना कि जेडी फ्री वर्ड्स है हमारा जरा अंदाज है उसकी बेस्ट सूट करनी है ते एक्सेप्ट करनी है मैं बहुत सारे साल लाइन तो मैं एक्सेप्ट किया कि जरा वक्त हमारे को नहीं होना बई तो जरा ना उसने लफ्ज जरा ना जोड़ने ने इट्स नॉट मी सो मैं जरा मैं बेस्ट करनी है मैं उसकी एक्सेप्ट कर सा सो तो सनम ये है कि knowing through acceptance जेडी है ना एक बड़ा लंबा सफर हो जाना सो जितना भी जरा ना सो you've known for a while who you are in that sense as well that कुछ टाइम जिला right time I also accept भी करी so at the moment we're going to enjoy your poetry so I'm going to bring you back to that the हमारा अगला सवाल समझ the writing process that's इसे ना काफी सारे जवाब दे चुके भी हो so मैं जानना चाहती हूँ कि writing process जरा ना हर बंदे नहीं हर राइटर नहीं हर पोइट ही बड़ी यूनिक होनी है सो मैं क्यूरियस हाँ कि थीम्स जो है ना आता पर्टिकुलर थीम्स जो उसकी ज़्यादा टच करनी are there any particular places जिले सो बई तक almost गारंटी होनी है इस जगह गई या इत्थे बैठी है ये मॉल या तो नज़म ज़रूर लिखन होसी are there any specific times of day I think सवेरा एक तो साना time है so are there any particular times that राती में सो की म्यूज़ जगानी है yeah so that's a couple of times there and ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਸਟਕ ਹੋਈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੋ ਖੁਸ਼ ਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੇ It's a very interesting question, and I think it's also the answers will always vary, and one will get inside, and it will help one artist. असां की help करसी एक दूसरे की भी इसने बारे जड़े भी जवाब हैं. जी So हमारे नाल ये तो नहीं है कि कोई particular places या times ने नाल fixed session कुछ है चीज़ा बीच में नहीं. कि every morning doesn't give me a poem, every evening doesn't give me a poem, every walk in a jungle doesn't give me a poem, but I very frequently go to these places. जंगलों में तो मैं बहुत ज़्यादा फिरनी हूँ पहाड़ों पर जंगलों में मतलब कि आदम बेजार रही नहीं होनी जड़ी वो बहुत बड़ी आदम बेजार औरत हूँ मैं तब मैं कि इंसानों को दूर बस जिस लोग ना हूँ so but it doesn't mean that every lone corner gonna give me it's जैसे मैं पहले बताया कि my muse ना idea क्या कि inside है internal है so I take that idea everywhere when I'm at a crowded place या I'm at a full house full है जब मैं उठा बैठी हाँ तो हमारे idea नहीं उठा जगह कोई नहीं क्योंकि सारे fix होए शोर है engagements हैं लेकिन when I am into these silent places let's say या रात ना time है मैं कर ली अपने कमरे च जंगलां च गई हुई हूँ दरिया किनारे बैठी हूँ so then there I have this vast space to have interaction with that person उत्तर फिर ये हो जैसे कि interaction इन होई है तो थिया तो सही है मैं उसके attend करना शुरू हो गई आप उस idea कि it's not always person it can be anything so then ओ जड़ा हमारा माहौल है ना वो भी फिर मेरी इंस्पायर फॉर एग्जांपल हमारी गुफ्तगू ने विच सिंबोलॉजी सिंबल्स ओ वाले आई जैसे मेटाफर हो आई जैसे कि मैं दरिया नी जुबान विच उस आइडिया ना गुफ्तगू करना शुरू हो जैसे या मैं पहाड़ नी पत्थर नी जुबान विच गुफ्तगू करना शुरू हो जैसा so then that's like a combination जी and with the themes I don't think so that वही वाली गल है कि हाले तक मैं कोई deliberate उस तरह कोशिश की थी नहीं कि sometimes there happen events जिस तरह उन असाना ताल्लुक है कि साउथ एशिया नाल इन रहने असा पाकिस्तान नी पॉलिटिकल सिचुएशन और हर दूसरे दिन जिस तरह इंसिडेंट्स होने आर्मी पब्लिक स्कूल ने बच्चों ना जड़ा इंसिडेंट है उसके असा कदे ना भुल्ली सकने फिर इस तरह वॉर्स होनियां जी जड़ी रेजिस्टेंस इस वेला चलनी पे बलूचिस्तान मारंग बलूच ये वो so I see people immediately writing poems about these things na so I kind of envy as well sometimes that these kind of events not all the time inspire me जी कि होना लग्या तो मैं मतलब कि पता है मिगी कि 4 दिन बाद न्यू ईयर है तो आज मैं न्यू ईयर पर नज़म लाजमी लिखनी चाहिए इस तरह नहीं आपको इंस्टाग्राम कुछ जमाने लिखी हो जी भावें जून विच बैठी गए तुसा न्यू ईयर पर नज़म लिखने पे हो but then it will find its relevancy later on so social events doesn't inspire me in that sense भावें वो कितने ही होल ना खतर अजीब जो मन ना एक होनी वो एक genre ही अलग है जड़ी poetry of resistance है for example जो visible resistance है चाहे वो
ज़ैनब ने केस थी रिलेटेड बहुत जी लोकां नज़मां लिखियां। सो हमारी शायरी ने अंदर एक ये है कि वो पर्टिकुलरिटी की एड्रेस नहीं करनियां एंड जी इट्स नॉट अ डेलिबरेट एफर्ट। समटाइम्स इफ दे डू हम्म, दैट्स आल्सो yeah, मतलब मैं कश्मीर विच पिछले दिना वो बिजली दे बिल ते जी प्रोटेस्ट ते सब चला yeah, मिगी कितने लोगां आख्या कि इस ऊपर yeah, मैं भाई yeah, ऑर्डर पे तो नहीं नसने तैयार होती जी हैं। yeah. अच्छा परफेक्ट एग्जैक्टली इससे पूरी मैं नेक्स्ट सवाल से पूछनी मैं आखिर नज़ पढ़ा नहीं सब पसंद जरी गल आखी है ना ये परफेक्ट फिट है अगले सवाल ना सो अगले सवाल ना जरा ना अस कुछ बंदे हैं ना सॉर्ट ऑफ राय है शायरी दुनिया के सो लिखो हर रोज लिखो ते जरा वो मुसल स्ट्रांग होना तो सो बेहतर लिखी सकने हो जबकि कुछ बंदे ना वो अक्सर के जरी है ना हर रोज लिखना ये भी कोई गल हुई जरा सो कोई चंगा थोड़ा लिखने हो हर रोज लिखने हो उसकी अपने अंदर पक्कन दियो तैयार होन दियो फील करो फिर जो लसन अंदर फट्टी दे बाहर निकल सी ना तो ओ शाकार हो सी जिसका क्या सोचने सौ वास्ता क्या वर्क करना अच्छा मिगी लगना कि इसी च डिपेंड करना कि तुसा ए जॉनरा नाल बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। लेट्स से बीइंग अ नॉवेलिस्ट आई थिंक यू हैव टू राइट एवरी डे अ लिटिल बिट and it goes like to stay into your own world with the characters and blah blah and it's not like hard and fast rule ki every day but I जी think मैं जितने भी नॉवेलिस्ट की जाननी है पर्सनली बड़े बड़े जड़े हैं वो अपने जॉनराज ने जायंट राइटर्स हैं वो ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸ਼ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ जी but as long as I think for the poetry and like these kind of individually ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉਸੇ inspiration based muse based depends upon ke something happens with me and I feel to say it like ego heaviness hona shuru ho jani out of nowhere or जी ताकि मैं किस तरह महसूस होने लगना कि आई नीड टू से इट आउट बाकायदा एक फांस एक जी जलन महसूस होनी अंदर और बंदे की लगना कि आई डोंट नो पहले तो समझ ही नहीं अच्छी कि व्हाट्स गोइंग ऑन इज इट लाइक या मैं ठीक हाँ मतलब क्या या होया मतलब नॉर्मल सी हाँ कुछ इस तरह ना कुछ खादा भी नहीं मैं काली पहन जी लगी मिट्टी है वो है जी लेकिन सो दैट इज समथिंग आई थिंक डिफरेंट और वैसे ही या जड़ियां इस तरह दियां भी बहुत सारे फोरम्स हैं असाने पास इत्थों पता जदों भी अंग्रेज़ां आने का आर्ट काउंसिल्स ना कॉन्सेप्ट जी बड़े सगीर विच इंट्रोड्यूस कराए से तो फिर द एकेडमिक्स अकेडमीज बनिया हुई फिर क्रिएटिव राइटिंग ने कोर्सेज होने फिर हाउ टू जी बिकम अ सक्सेसफुल राइटर यस टाइप सेल्फ जी हेल्प बुक्स भी होनियां जी तो उसी जो जरूर तुसा की आखने के एवरी डे लिखो जी जी या या आई थिंक ये तुसा समझी गए हो कि हमारा क्या जी मतलब है फिर एवरी डे नाल सो एज ए नॉवेलिस्ट यस इट गोज लाइक दैट बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो दैट थैंक यू आई थिंक कोमल जरा ना उन सम की दसो कि स्वकी केरे शायर इंप्रेस करने ता उन्ना विचों एक जरा को शायद सुना या शायर पसंद वैन उन्ना ने एक तो शेयर सुना सो प्लीज अच्छा अच्छा ये भी इसी च भी वो एक लंबा सवाल है लेकिन ज़रा असां प्हाड़ी च गुफ्तगू करने आं ते प्हाड़ी ज़ुबान च में हमीद कामरान साहब न सारे ही माड़े दे चुना गी जानने ते उन्हां दियां कुछ नज़मां उन्हां सुनाइयां सियां मैं उन्हां नाल सामने बैठी के सुनियां सियां तो बड़ा उन्हां ने एक उसी च कल्चरल एथोस विजिबल है ना उन्हां दियां नज़मां विच जी भी असल च असां दी प्हाड़ी ज़ुबान ना वो एक बनना ही फिर उस तरह ना अब एवरी जी लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स इट्स कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज लेकिन जी असानी ज़ुबान च क्योंकि ओरल है तो जी फिर असां थीम्स ऑटोमेटिकली उहे बनी जाने के वी टॉक अबाउट आवर प्रैक्टिसेस उर्दू जी शायरी इस तरह नहीं लगे लगी अंग्रेजी शायरी भी इस तरह नहीं लगे लगी कि जी शेक्सपियर नियर पोएम्स आर नॉट always representative of the culture of England or London. जी It's different. So जी बहरहाल हमीद कामरान साहब ने एक नज़्म है कोको खासैया तो वो बड़ा मिगी उन्होंने मिगी नज़्म नहीं है याद लेकिन मैं जी सुनी जदों मिगी पसंद आई फिर से तो उन्होंने एक और है कि काश मैं भी भाला होना जी ते ओह् बी मिगी बड़े मैं उस नाल रिलेट भी करी सकनी आं कि आहो भाले ही होने ते स्हेई सा जी इस तरह ओह् हैन लेकिन ज़्यादातर मिगी शायरी बिच उर्दू शायरी की मैं पढ़नी आं शौक नाल अंग्रेज़ी भी पढ़ी है लेकिन उर्दू ज़्यादा जी तो उस विच पुराने मतलब मीर ज़ाहिर है ज़्यादा मिगी जी पसंद न उन्हां दा इंतखाब मीर अक्सर पढ़नी रहनी आं बाकी नमें जेह्ड़े लोक हैं उन्हां चों मजीद अमजद साहब कोलों मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर आं मुनीर नियाज़ी कोलों बहुत ज़्यादा इंस्पायर आं मुनीर नियाज़ी दी जेह्ड़ी एक फ़िज़ा है आई रियली लव इट बट आई एम नॉट वेरी गुड एट रिमेंबरिंग वर्सेस आई थिंक आई विल ट्राई टू मीर ना एक शेर है कि किन नींदों अब तू सोती है ए चश्मे गिरिया नाग मैं जगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया हाँ, तो जी फिर एक और शायद ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि अ
नहीं मिगी उसमें दुआ मिसरा याद अचना पे पहले नहीं याद अचना पे एनीवेज इस तरह है कि आई जी कैन ये जेडी 2 वर्सेस वाली पोएट्री है इसमें नाल आई जी कैन it's pleasure to just to read it as well. तो ये है कि नून मीम राशिद साहब ने शायरी ऑफ कोर्स वो भी मिगी वो बड़ी एक डिफरेंट है बाकियों को लोना नहीं जेडे नज़्म ने तजुर्बे और एक जी मॉडर्न थॉट उस which डिस्कस on. So yeah, I have like this kind of different थैंक यू असां हुन अपने शो ने एंड निको लगने लगे हुए सो अपनी एक और प्यारी की नज़म सुनाई छोड़ो प्लीज अच्छा प्रिया तो मैं दो ही सोचियां सियां तुसा ने कोई नज़म ना सुना नहीं पहले तुसा ने एक और नज़म सुनसा शुरू विच सुनाई एक ते हुन तुसा नी वारी है पहले तुसा नज़म सुनाओ फिर मैं सुनासा फिर असां इसकी कंक्लूड करिए असां अज पहाड़ी नहीं करनियां लगियां ते मैं इक्के ही पहाड़ी नहीं अपने कोल कड्डी ते रखी सी दूई जेह्ड़ी है उर्दू नहीं है सेम मौजू पर है और सो श्योर मैं तुसा उर्दू नी सुनाओ मैं हुन मैं थोड़ी मीर उर्दू जेड़ा है उर्दू ने मौलाए उर्दू थी मैं इब्तिदा करी रही हां तां हुन उन्हां ने इजाजत थी बाद अस जेड़ा कोई मर्जी करां आई थिंक जिस तरह मैं स्टार्ट आखिया सी ना कि असां कश्मीरी वर्सटाइल असां एक ज़बान बोलने वाले ना सो असां ते जेह्ड़ा ना सो चलना सो yes and that's the beauty yeah जी एक मैं सेट लिखी सी उसले चाइल्डहुड जेह्ड़ा ना एक फेस्टिवल सी थे इंग्लैंड ते उसने वास्ते मैं तैयार कीते सन 4 डिफरेंट मौजूआं पर त्रै नज़मां त्रै ज़बानां च सो एह् जेह्ड़ी है ना जे नानी ने गड़ा बुझिया से ओह् भी बचपन दे बारे च सी ते एह् उर्दू च है ते माड़ियां ज़बानां जेह्ड़ियां बाज़ वक्त किरदार आरन मैं एक से दो च लिखा ना ते त्री ज़बान शिकायत करी दिंदी नहीं ठीक है माड़े नाल कोई दुश्मनी है माड़े नाल लिखनी सो इसदे च अंग्रेजी है और मैं अज्ज ना सनानी है उर्दू वाली सी सनानी है सो उर्दू च मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे दिल बेकरार को आखिर क्या चाहिए आंखें बंद करूं गर तो नजर आता है ये मुझे रात गहरी स्याह चाहिए मुझे रात गहरी स्याह चाहिए फिर बड़ा हुआ आसमां तारों से चाहिए चांद तो लाजिम है पर 14वीं का चाहिए चांदनी में सामने वाली पहाड़ी पे खरगोश और लूमड़ भी दिखाई देना चाहिए सुबह के तारे के साथ दादी के उठाने की आवाज चाहिए तारों में पतंग ढूंढने के लिए बहनों का साथ चाहिए रमजान में सहरी को बाजरा और दही चाहिए बरसात में मकई का पराठा नानी के हाथ का चाहिए शब बरात के गोलू के मुकाबले के लिए कजन एक एक वो ही चाहिए ईद पे जूस मिठाई और झूला बड़े मामू से चाहिए गंदम दाल और तिली अपने ही खेत की चाहिए हर रोटी पे मक्खन और ताज़ा दूध के साथ चाहिए पानी यख ठंडा अपने ही कुएं का चाहिए मैं किसान का खून हूँ मुझे अपनी ज़मीन चाहिए मैं कश्मीरी हूँ मुझे कश्मीर चाहिए वाह बहुत अच्छा थैंक यू सो सबको कोमल नेक्स्ट पुछना सी कि अपने फंड्स वास्ते कि सोने कोई मैसेज है सोने प्लेटफॉर्म अगर सोने वो शेयर बुझना चाहन तो कुछ अच्छे न एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से या ओके सो मैं तो अपने जेह्ड़े भी मिगी सुनने लोग शौक नाल सुनने ते उन्हां दा मैं शुक्रिया अदा करसां और उन्हां दी हौसला अफजाई ज़ाहिर है माड़े आस्तै इट एड्स इनटू माय प्रोडक्टिविटी एंड अजय तक तो माड़ा एक मैं इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया एंगेजमेंट माड़ी है नहीं सी एंड आई डिड नॉट परस्यू इट बिफोर बट नाउ व्हेन आई डिसाइडेड टू डू इट एंड इट्स आई थिंक इट इज़ डूइंग good to me and as well as to my audience. So it goes, I would like it to be, continue with future इस तरह होगा और एक co-creative relationship नहीं मैं हमेशा कायल होनी है one sided थोड़ा इंटरेक्शन makes a Yeah. help yes Yes. जी और बस मैसेज ये उसी कि अगर इफ दे वांट टू लिसन स्टे कनेक्टेड तो मैं जड़ा एक पहाड़ी पल्स विद कोमल राजा ने नाल एक फिर पेज बनाया सा क्योंकि ज़रा हमारी पर्सनल प्रोफाइल पर मैं चीज़ें शेयर करनी रहनी है लेकिन हमारी मर्जी ये है कि इस चीज़ से एक सेपरेट हो जाए क्योंकि पर्सनल हमारी प्रोफाइल विच हुआ तो सारी गल है कि एक तो असां लैंग्वेज ने वाला इतने वर्सटाइल हाँ फिर जड़ी हमारी engagement है it's not only about poetry it's not only about pahari I'm a researcher as well and my research focus is about people of Kashmir as well so हमारी एक जड़ी academic expertise या वो एक journey है जी वो बिल्कुल एक अलग साइड है एंड आई आल्सो समटाइम्स गेटिंग सो मैं आई डोंट वांट टू Yeah. डिक्टेट माय ऑडियंस के वो जड़े हमारी पर्सनल प्रोफाइल की किस तरह एक्सपेक्टेशंस की इन्नी वो अपनियां करने दा असां उन्हां ने एक्सपेक्टेशन नहीं हिसाब नाल टूरा सो आई जस्ट वांट टू लेट इट बी जिस तरह हमारी पर्सनल प्रोफाइल है कि उसी हमारी मुख्तलिफ सेल्फ्स ना वो एक रिफ्लेक्शन है होता है चाहे वो हमारा एकेडमिक सेल्फ है पोएटिक सेल्फ है हमारा पर्सनल सेल्फ है
तो जी दैट्स व्हाई फिर मैं ते लोकां अगर सुनने ओ जेह्ड़े भी अज असां की सुनसन इस प्रोग्राम विच सुनने कि आखसां कि माड़ा पेज जेह्ड़ा ऐ पहाड़ी पल्स विद कोमल राजा उस उप्पर सुनी सकने माड़ियां चीज़ां उत्थै एक्सक्लूसिवली हर चीज़ पहाड़ी ज़ुबान च है और सिर्फ जी शायरी उस च होर चीज़ां भी हैन उसी मैं फलसफा कदें डिस्कस करनी होनी आं कदें होर इस तरह दियां चीज़ां सो इट्स आल्सो अ वास्ट एंड वर्सेटाइल स्पेस सोने पेज ने बारे च एक होर भी तारीफ करसां कि तुसें एक लफ्ज़ भी अक्सर देने हो कि एह् प्हाड़ी ने लफ्ज़ आ जिसकी डिस्कस करसां स्टफ सो you know that's interesting as well so जेह्ड़े बंदे प्हाड़ी शायरी च भी दिलचस्पी रखने न या प्हाड़ी थोड़ा सिक्खना भी चाहने या डिस्कस करना चाहने उन्हें की भी इंटरेस्टिंग थीम्स एंड चीज़ां लभसन सो पहाड़ी pearls with कोमल राजा यस as Komal Raja, thank you so much for being my first guest. I'm very grateful to you. And अक्सर सोच होना कि जी आज ये बंदा बुला ही रहे हैं नहीं मैं कि जरा ना उन्हीं गारंटी देनी है कि सुन के आइंदा फिर बुलासा and I look forward to seeing you again. Yes, it was really nice talking to you and listening to you, and thank you very much for inviting me. So Thank you. yes, we will continue this. Inshallah. Allah Hafiz. Okay, Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Now, thank you very much, Tanimi, for listening and for joining. अगले महीने ने जेह्ड़े माड़े शायर होसन ओह् उर्दू ने लिखने आह्ले होसन ते उस तो अगले महीने ने अंग्रेजी आह्ले ते मैं इ'यै फॉर्मेट जेह्ड़ा ना हर इत्थूं रेगुलरली रखसां क्योंकि जिस तरह मैं है कि असां सॉर्ट ऑफ जेह्ड़ी कश्मीरी जेह्ड़े बंदे आं थोड़े जे मो कॉम्प्लेक्स आं असां सिर्फ इक ज़बान बोलने ना इक ज़बान असां बुझने ना so असां दी जेह्ड़ी शायरी है I'll keep bringing you different aspects of ourselves and our languages. I look forward to meeting you again. I hope you have a wonderful month. Thank you. Allah Hafiz.